Devendra Fadnavis is all set to take oath as the new Chief Minister of the state. Devendra Fadnavis was unanimously elected as the Maharashtra BJP Legislative Party's leader, paving the way for him to become the Chief Minister for the third term. Now, the mega oath-taking ceremony, along with both his deputies, Eknath Shinde and Ajit Pawar, will take place at the iconic Azad Maidan in South Mumbai in the presence of Prime Minister Narendra Modi, along with other BJP-ruled chief ministers. A large number of supporters of the Mahayuti allies, the BJP, the Shiv Sena and the NCP are also expected to gather at the venue to witness the ceremony. Sources have told India Today the BJP has decided that they will be retaining the Home Ministry and Eknath Shinde has agreed to be the Deputy Chief Minister of the state. Now, this came after it was Devendra Fadnavis who insisted that he wanted Eknath Shinde to be a part of his cabinet and that Eknath Shinde will play a vital role in the government. Shinde also expressed a lot of gratitude towards Devendra Fadnavis for backing him as the Deputy Chief Minister of the state. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथेच वाटतं ना, तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। और जब इतना भारी बहुमत उनको था तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे महाराष्ट्र की जनता के जल्द से जल्द नेता चुना जाएगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन चलो, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा बोझ जो जिस तरह से लेना चाहिए। महाराष्ट्र एक नंबर का स्टेट रहा है हमेशा, देखते हैं कैसे जाते हैं। सभी की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में जब से चुनाव हुआ है 23 तारीख से आज तक टीवी चैनल पे और न्यूज़ पे कई सारी बातें आ रही थी कि शायद नेता चेंज करेंगे, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, इनको केंद्र में बुलाया जाएगा। तो इन सभी बातों पे आज मतलब ये उनके नेता बनने के बाद मोहर लग गई। सारे जो अटकलें लग रही थी वो खत्म हो गई है। Now, from being a defiant youth in Nagpur to the corridors of power in the state of Maharashtra, Devendra Fadnavis has consistently reshaped the state's political landscape. After rising to become Nagpur's youngest mayor and then to the chief minister of the state, his political journey has not been without a lot of hurdles. But with the latest triumph in the 2024 assembly elections, Devendra Fadnavis is all set to lead the state of Maharashtra once again. A closer look at his political journey. From Nagpur's youngest mayor at 27 to Maharashtra's second Brahmin chief minister. Devendra Fadnavis has navigated the state's political terrain with composure and strategy. Known for the infra push during his first term, projects like the Mumbai-Nagpur Samruddhi Expressway earned him widespread respect, resonating with urban voters and rural alike. The path wasn't always smooth.
In 2019, after BJP's alliance with Uddhav Thackeray collapsed, Fadnavis famously vowed a comeback. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। Fadnavis' words proved prophetic. Within 2 years, the Maharashtra Vikas Aghadi government crumbled, with the strategic alliances leading to his return to power. This time, Fadnavis took on the role of Deputy Chief Minister, showing discipline and loyalty to his party. His political acumen was especially evident in the 2024 Assembly elections. With a landslide victory in the elections, Fadnavis emerged as the natural choice to lead the state. हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। At 54, Fadnavis remains a young leader in political terms. With his leadership now firmly in place, the next chapter of his journey begins. From the streets of Nagpur to the corridors of power in Maharashtra, Devendra Fadnavis has proven that his political journey is far from over. Bureau Report, India Today.